Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Sabina Sheikh, and in this video quickly we'll learn about research paper. From this video you will learn what research paper is, why it is written, how it is written, what each part means and what it does, and how it is useful for your studies and for your career. Student will understand what exactly research paper is. It is a detailed piece of academic writing, your academic writing that represents a problem or a question you want to study. रिसर्च करने से पहले आपको आपका टॉपिक डिसाइड करना है और उस टॉपिक्स में रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज नज़र आते हैं, प्रॉब्लम नज़र आता है, दैट यू हैव टू सॉल्व. ओके, अ प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन दैट यू वांट टू स्टडी. एविडेंस और डेटा यू कलेक्ट और रिव्यू, ये हम आगे पढ़ेंगे. Analysis of that data and conclusion or insight you draw from it. In simple words, students, a research paper is about your thinking, your collected information, and your logical explanation for your research. Why to write a research paper? There are many reasons to write a research paper, but we will study four main purposes. First is to explore, to learn about a new topic. अगर आप कोई चीज़ के बारे में इंक्विजिटिव हो, आपको बहुत जानने की इच्छा है, देन यू कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस, और हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट मैनेज देयर फाइनेंसेस. बिकॉज व्हेन यू आर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क, टू डू अ जॉब, साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. सो ये भी आपका, अगर आपको चाहते हैं, ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. Next, to explain, to show how, show reasons or relationship. Example, why do people prefer herbal beauty product over normal cosmetics? Okay, this research will be about the explanation, that you want to show the relationships or you want to show the reasons. To prove, to test an idea or a theory. For example, you want to test online is better or offline is better. To test these things, of course you will have to do a research, you will have to collect the data, you will have to ask certain question, and then only you can compare and give the idea for the particular theory. To contribute, definitely students, whatever research you do, major, minor, whatever kind of a research you do, आप कुछ ना कुछ contribute करते हो. You share new knowledge, you share your study. Maybe it will help the future students, future researchers, even for the teachers. Types of research papers, students, there are many types of research paper. We are going to study few of them. Theoretical, this is completely based on theory. For example, you want to use existing books, existing articles to discuss ideas. For example, a feminist perspective on women empowerment. अगर आपको इस फेमिनिज्म के बारे में, फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव के बारे में लर्न करना है, यू कैन रिफर टू मैनी थीसिस, मैनी बुक्स एंड आर्टिकल. दिस कैन ऑल्सो बी अ रिसर्च पेपर. This can be a kind of a research paper. Empirical or primary database. Empirical, basic research, initial research, and primary data is basically based on your first hand information. You can use your own way to collect the data. It can be survey, it can be Google form, it can be interviews, it can be monkey survey, anything. A survey on college students social media habits, this can be example of your research paper. This topic you can take as your research paper. Review paper, this is based on secondary data, means the data which is already been published by someone somewhere. It summarizes many other studies. For example, if you want to understand about the feminism, about feminist perspective on certain things, so you can review. You won't be the first person who's undergoing such kind of a research. There are many people who have studied and done research for the same. So what you can do, you can review their research papers, you can review dissertations, you can review thesis, and you can then add your own ideas and your own thoughts and views after doing a thorough research. Case study, it's a deep analysis of the person, group, or place. As the name indicates, this is also a secondary data. For example, a case study on women entrepreneur in Dharavi. You can take such kind of a research. This will be based on the secondary data, and you can again add your own perspective, add your own knowledge, add your own deep research, and go ahead. Now, what makes a research paper a actual research student? As the name indicates, you have to research a study which has already been published, a study which has already been done. You need to research it, you need to add more value to it, you need to add more elements to it, you need to find out the research gap, and you need to understand what is missing, and that what additional you can contribute in the particular research.
तो देर आर मैनी एसेंशियल एलिमेंट, हम चार या पांच स्टडी करेंगे. अ रिसर्च प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज to understand the essential elements of your research. What are the things that has to be present in your research. सबसे पहला है अ प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन. जब भी आप रिसर्च करना शुरू करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ क्यों है, वाई दिस इज द पर्टिकुलर थिंग इज दैट. वो क्वेश्चन का ही आपने जवाब ढूंढना है. एग्जाम्पल, वाई डू स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग ओवर ऑफलाइन. सेकेंड, अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव. कोई भी रिसर्च विदाउट पर्पस will not add any value. So आपका रिसर्च करने के लिए you have to have a particular a specific objective. Example, to understand factors influencing students buying behavior. अभी आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि you want to understand कि स्टूडेंट्स का बाइंग बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है. मे बी अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मे बी द प्राइस, मे बी द प्रोडक्ट, मे बी द सर्विसेज. तो आप ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. Next, you have data or information. To do any kind of research, student, you need to have a primary or a secondary data or even both data to give the evidence of your study. आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? सर्वे रिजल्ट्स, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा. डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा. हाउ डू यू इंटरप्रिटेट दैट इन्फॉर्मेशन. आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है, आप उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे. दैट मीन्स आप उसे दुनिया के सामने किस तरीके से लाओगे. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप यू कैन यूज़ ग्राफ, परसेंटेज, थीम्स और कोड्स. देर आर मैनी अदर मैथड्स. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. what did you discover and why does it matter. कंक्लूजन के साथ आपने सजेशन भी देना होता है. आपका रिसर्च क्यों, कैसे और आपकी अपनी सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट करेगा. So that's all for this particular video, students. Next, I will be explaining you how to write a research paper step by step. Thank you so much.